what is derivative? We all are well familiar with this. That what are derivatives, because we have studied it in earlier classes. Derivative is basically in mathematics, this is the rate of change of function. Rate of change of function means independent, whether it is changing. The rate of change of function means the independent function is changing when we are putting some values in it. Because, okay, first I will explain this through examples too, but let's have a question that what do you think that which mountains will have hardest to climb? Any answer please? Most steeper one. No. It's wrong, because here is the answer related to derivative. The correct answer is K2. Now the answer is, this is correct because it is more steepest than Mount Everest. Okay. Understand everything? Is it clear? Yes, sir. Clapping for. Okay. मैंने जिस तरह अभी बात की कि K2 जो है वो ज़्यादा स्टीपेस्ट है एज कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को इलस्ट्रेट किया कि ये दो माउंटेन्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड इसकी हाइट से ज़्यादा है, लेकिन इसमें से स्टीपेस्ट कौन सा है? दिस वन. Why it is more steepest? Because we have studied about slope. The slope which have greater ratio will have more steepest of among the two. Understand this thing? Because this slope की ratio ज़्यादा होगी, means कि हम slope को कैसे this is basically ratio between independent and dependent variables. We have studied this thing. The slope is basically describing the steepness of the line. यहाँ पे भी उसी चीज को इलस्ट्रेट किया हुआ है. अब यहाँ पे उस चीज को लिंक करने का डेरिवेटिव से क्या रीजन है? बिकॉज जो डेरिवेटिव होता है वो भी एक टाइप का स्लोप ही होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Arrow. Okay, here I have explained about slope. You all are familiar with this. This is one straight line. Here x is changing, and along with this, when x is changing, the values of y are also changing. जिस तरह x चेंज हो रहा है उसी तरह y की वैल्यू चेंज हो रही है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हमने डिफाइन किया था कि ये स्लोप होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो भी हमारे पास चेंजिंग आ रही होती है. अब ये क्या है? ये भी एक स्लोप है, ये भी एक स्लोप है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो स्लोप है ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है. दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन व्हिच वी कॉल्ड इट एज द डेरिवेटिव. अंडरस्टैंड दिस थिंग? Okay, thank you so much. This one somehow you can say suppose 2 points and this slope, or you can say slope of a line, and it is usually known as slope of secant line. Secant line. If we consider this p as a fixed value and we shift the q towards p such that you are getting only one point, that p and q are both at the same point, then we will say slope of tangent line. That is 1 point information at an instant. This is some kind of a line, okay? It is known as slope of secant line, and this is known as slope of tangent line. In exam, if I will ask what is the difference between slope of secant line and slope of tangent line, you should tell us this, okay? One is some kind of a complete line, other is just a point. Clapping for Adiba. Very well done. Good. Appreciate my daughter with some energy, okay? You jealous sir, oh, okay, next time I'm sorry. Okay. I'm sorry.
sorry. I am sorry. Now just move towards the formula for the derivative. We have studied about slope, that it is defined as this is the change, slope is equals to change in y over change in x. यहाँ पे वही चीज़ illustrate हुई है कि that y जितना x में चेंज आ रहा है उतना ही y के अंदर चेंज आ रहा है, इसको हम स्लोप से डिराइव करते हैं. अब हम डेरिवेटिव का फार्मूला आगे स्टडी करते हैं. This is what we have already seen this and have covered in our previous classes, that differentiation f of x is any function, okay, is equals to limit del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x. Now what is this? This is basically You need to change the color to black for high contrast. this is what first principle rule. इसकी भी आगे इलस्ट्रेशन में बताऊंगी कि ये हमने किस तरह डिराइव किया इस फार्मूले को, लेकिन बेसिकली इस स्टेज पे इसको समझना ये है कि यानी कि फार्मूला है क्या, जो स्टार्टिंग फार्मूला हमने डेरिवेशन के लिए पढ़ा था, ठीक है. उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे पीछे हमने ये बात की थी कि ये जो डेरिवेटिव का स्लोप होता है, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, वो क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि यानी कि ये तो हम लेते ही जस्ट वन पॉइंट के लिए ऊपर है, लेकिन अगर हम इसको जिस तरह पहले भी बताया कि हम स्टडी करते हैं कि ये P पॉइंट है और Q पॉइंट है, और एक ऐसा स्टेज आता है कि जिसमें Q रीच कर जाता है इधर P तक, तो दैट्स मीन कि वो क्या हो चुका है, अब वो एक सिंगल पॉइंट बन चुका है और वहाँ पे वो टेंजेंट को शो कर रहा है. Why it becomes a single point? When I have said that means When delta x approaches to 0. Well done. Good. No change along x-axis. Delta x shrink and delta x approaches to 0. Then Q approaches to P. Okay. Well done, Adhika. Well done. हमने अब जिस तरह ये पीछे डिफाइन हो चुका है, अभी उसी की थोड़ी सी डिस्कशन है कि दैट जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, वो यहाँ पे इशू कर रहा है कि कोई भी एक फंक्शन है और उसके ऊपर एक पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और इस फंक्शन फॉर एग्जाम्पल कोई भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, और इसका जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे उसका, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहलाएगा. ओके, इसको हम अक्सर इसको हम इंस्टेंटेनियस चेंज भी कहते हैं, डेरिवेशन को अक्सर हम इंस्टेंटेनियस चेंज भी कहते हैं. ओके, देयर इज एन एग्जांपल, और ये उस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की इलस्ट्रेशन है कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमारे पास कहाँ से आया था. हमने दो पॉइंट्स लिए P एंड Q. P पॉइंट को नाम दे दिया हमने x नॉट का, और Q पॉइंट को नाम दे दिया हमने x नॉट प्लस डेल x का. अब x नॉट प्लस डेल x क्या है? Del x is what? It's the distance that this function has covered from x naught to this point. तो इस पॉइंट का अब क्या पॉइंट्स बन गया, इसका नेम बन गया x naught plus del x. Then यहाँ पे x naught y naught हो गया, वहाँ पे क्या हो गया होगा x naught del x naught plus del x and then y plus del y आ जाएगा. This point, my children, it will become okay, x naught yes, thank you so much. No. I'm sorry. Here, it will become x naught plus delta x, y naught plus delta y. So now this is the point, So x naught shift, okay, change along the x-axis, and this one is the one, and another will, okay, this one is the second, this y plus, basically f what? It's y, okay, represent. So y naught plus delta y. Is it okay? Yes. Thank you so much. No clapping for me, okay? Okay. So इसमें हमने स्लोप का जो सिंपल हमने लाइन के लिए फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था कि y2 minus y1 over x2 minus x1, or maybe x minus x naught minus x or y minus y naught. So
यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें, यानी कि वो पॉइंट y2 था, y प्लस डेल y देन माइनस इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप तो चेंजिंग किस तरह आई है कि 2 पॉइंट्स हमने लिए और उन 2 पॉइंट्स के दरम्यान में हम देख रहे हैं कि स्लोप किस तरह बन सकते हैं। अब ये चीज़ किसको डिनोट कर रही है, ये इस लाइन को डिनोट कर रही है, ये जो ब्लू कलर में शो हो रही है। लेकिन अगर हमें इसी मीन्स के फंक्शन का अगर हमें इसका लेना पड़ जाए, डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, वो कैसे लेंगे, उसके लिए हमने जो पीछे फार्मूला देखा था जो था लिमिट del x approaches to 0, then f of x plus del x minus f of x. So उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें सिंपल आपके पास पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, x पॉइंट आपको पता होगा, डेल x आपको ये गिवन होगा, देन आप उसी को उसमें से माइनस करेंगे और एफ एक्स पे डिवाइड करेंगे। डेल x अप्रोचेस टू 0 लिखने का क्या मतलब है, दैट अभी हमने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि किसी एक इंस्टेंट पे किसी एक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई हम उसको जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके होंगे तो उसमें जब डेल x की वैल्यू आएगी तो उसको हमने क्या करना है, 0 पुट करना है। So हमारे पास simply उसका डेरिवेटिव actually we want to minimize the gap, okay? We want to minimize the gap between point P and point Q, okay? Okay, please. Here is an example of that first principal rule. हम कहते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली क्या है कि एवरी रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि जो x है वो इक्वल है x1 के, उन वैल्यूज को पुट करें। अब फंक्शन क्या था हमारे पास, f of x equals to x square, उसके अंदर x की वैल्यू पुट की x1 प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस, इसी तरह इसका फार्मूला ओपन किया, कैंसिलेशन हुई, डेल एक्स आ गया, इसके बाद ये आ गया, इधर से कॉमन लिया, डेल एक्स कैंसिल, तो x1 प्लस डेल एक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डेल एक्स को 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x1। You mean ignore the delta x? No sir, we have put del x equals to 0. Del x is equal to 0, del x approaches to 0, am I right? Yes sir, we have applied limit over here. Yes, limit, but it's approaches to 0, not. Okay, good. Thank you. This is. Okay, please here, I need your kind attention. For example, you want to determine the derivative of xn. What will be the derivative of xn? nxn minus 1. nxn minus 1. This is some kind of a power rule, am I right? Yes, sir. We know if she told us some kind of a change along the y-axis, okay, if we are considering the change here, x plus delta x change, and this is the y, okay, this is the y change, this is the y original, so this is the, are you getting my point? So in the denominator, of course, if only del x, and if, okay, now del f, okay, del x, if we are expanding this one, this factor, x, okay, next slide, x plus delta x n, so we can write x plus delta x, x plus delta x, too many multiple of x plus delta x, or you can say n number of delta x plus delta x. Similarly, like 2, okay, if scale, if 2n mean 2, okay, product of n number of 2, you are multiply, okay, factors. So if we can multiply this first one with, okay, all the x, then we will get x n.
And if we multiply it with the next one, then we will get n, Plus because n number of x, okay, so 1 will minus 1. and somehow delta x plus too many small values, or you can say negligible values. In your intermediate classes, your teacher told you negligible values. So if this is somehow what binomial theorem, you can also expand this binomial Expansion. If you go back, let me substitute the value of this, okay, then we can write here x n plus n x n minus 1 delta x, okay, plus so many junk values. Here this one somehow junk values, you are also saying negligible values, and what else? This formula, this one minus x n in the denominator delta x, so this will be cancelled out, this will, okay, both cancelled out. In the remaining you will have n x n minus 1 delta x plus junk value. And what will happen here, you will cancel out this one, and in the final answer you will get, okay, though because we are applying, why it will be junk value will become 0, as my daughter told us that delta x limit we will apply, delta x approaches to 0, and we are considering ignore them and equivalent to 0, then in the final you will get an answer like this: delta x limit delta x approaches to 0 will become this one, and the other side, okay, you will get n x n minus 1 plus 0, and though here the one you will apply limit delta x approaches to 0 to the junk value, okay, this one n x n minus 1 plus junk value, this whole term will become 0. So technically what is this? This is very beautiful thing. For example, on the other side, sir. Thank you. My daughter, I'm so sorry, because it is your part and you explained very well, but somehow, you know, students are very cheeky. They want to know. My children, if you notice this, there is an aircraft, there are too many birds. Okay, for example, you are working in some air force, okay, you want to localize the enemy aircraft, then this is the nxn minus 1, the junk values, you will ignore the birds. Okay, your derivative will help us to localize some point, information at an instance, okay, some meaningful, some useful information which you want, okay, some big thing. So this one, and this one is the negligible value. Technically these are not the zeros. Yes, please. Sir, you mean focus on the main thing? Yeah, of course, derivative tells you some information at an instance. Something, okay, particular thing, not all the things. So the rest of the things mean negligible, junk values. So that's why we are considering it's equivalent to 0. Similarly, once you will, okay, on the eve of, okay, this will somehow, I will never. That's okay. So on eve of Eid al-Adha slaughtering, okay, is usually Air Force advertise that they also order to shoot the birds. To whom? Bird shooters. Bird shooters will not target the aircraft.
they are applying, okay, in the advanced country, developed world, they are using the automatic guns in order to kill the birds, so they cannot damage the aircraft, so the aircraft will not be focused, then junk values will be in the focus. Reverse engineering. Are you getting my point? Yes, sir. So no need for this is the thing. So please. Okay. Now let's move ahead. कि अब इनको डिनोट कैसे किया जा सकता है. ये डिफरेंट मेथड्स हैं इनके डिनोट करने के. कोई भी फंक्शन है f of x, उसको डिनोट किया जा सकता है दो टर्म्स में, दो फॉर्म्स में, न्यूटन फॉर्म में और लेविन्स फॉर्म में. अब न्यूटन फॉर्म में आप क्या कह सकते हैं कि f प्राइम ऑफ x इज एनी फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इस तरह डिनोट किया जा सकता है, या फिर d by dx of f of x. Mathematician or scientist, you can say Newton used this notion, okay, f prime, and Leibniz used this notion, okay, they are kind of to demonstrate the derivative kind of thing, information at an instance. Okay. So same here for y and xk plus 1. This is also the functions. Good. Okay. Now the other thing we have to note it कि इनका मतलब dy by dx का मतलब dy over dx doesn't means that कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बल्कि इनको कन्वेंशनली हम dy by dx पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास हम इन दोनों की रेशो ले रहे होते हैं. और रेशो कभी भी यानी कि उसमें कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो दोनों डिवाइड हो रही होती हैं. यहाँ पे जो डेरिवेशन की टर्म में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि दे बोथ आर जस्ट वी बाय कन्वेंशनली वी से दैट dy over dx they are not going to divide. Now there comes the rules for the derivation. First we have studied, the first rule is the first principal rule that we have covered. The next are constant multiple rule, power rule, sum rule and difference rule. Constant rule means that I will also explain the example, but simply if we study from here that कि इसमें क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन होता है और उसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस कांस्टेंट को पहले हम y लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिया हुआ है c को हमने y लिया, और फिर उस फंक्शन का हम क्या करते हैं y से डेरिवेटिव ले लेते हैं. इसकी भी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे. फिर जब पावर्स की why we are keeping the constant outside of the derivative operation? क्योंकि जब हम सिर्फ कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि हमने कहा था कि जो y के अंदर जो चेंज आएगा वो हमें डिनोट करेगा कि डेरिवेशन क्या है. लेकिन जब हम you mean to say that constant is not going to change? कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह चेंज होगी? कांस्टेंट इज कांस्टेंट. Brilliant, clapping for you. Clapping is wonderful. No constant is not going to change. Of course, derivative cannot be applied on the constant thing because derivative only work out on the changing thing. To information at an instant change. If there is no change, then of course constant means dead. I am not breathing. I am dead. Okay. I am not a living person. I hope you are expecting. No, sir, no. अभी उसी से रिलेटेड एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है और इसमें y की वैल्यू यानी कि है तो ये फंक्शन लेकिन एक कांस्टेंट फंक्शन है कि जिसमें y को उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि y इक्वल्स टू 4. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली वो इक्वल होगा 0 के. उसके बाद पावर रूल की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक f ऑफ x फंक्शन है इक्वल्स टू x ऑफ 5. तो हमने अभी पावर का देखा था. पावर रूल में क्या होता है कि उसकी पावर पहले आती है देन x into -1. तो यहाँ पे भी पहले हम 5 लिखेंगे देन x 5 minus 1. सो दिस इज आवर आंसर फॉर पावर रूल. ये भी एक एग्जांपल है कि एक फंक्शन गिवन है हमारे पास f of x x square minus 4x plus 6. इसमें भी हम इसे जब डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर है पावर रूल लगेगा 2x आ जाएगा. यहाँ पे भी जब 4 कांस्टेंट रूल लगेगा कि 4 बाहर आ जाएगा और जब हम x पे लगाएंगे तो उसकी वो 0 हो जाएगा और आगे तो है कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा.
आगे ग्राफ रिलेटेड एग्जांपल है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें टी क्यूब माइनस 12t प्लस 4, ये कोई भी एक फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी आंसर आएंगे उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब इसका सॉल्यूशन आगे है, लेकिन That's okay. They are genius. Okay, they will manage it. Okay. The next slide. These are the applications of derivation कि डेली लाइफ में हमारे पास डेरिवेशन कहाँ यूज हो रही होती है। तो सबसे बेसिक एग्जांपल जिससे हम सब बिल्कुल फेमिलियर भी हैं वो स्पीडोमीटर्स में आके जो ऑटोमोबाइल्स में व्हीकल्स में यूज होता है। कि इसका क्या मतलब है कि हमने कहा है कि डेरिवेशन क्या है कि एक इंस्टेंट में कोई भी चेंज, तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर बिलफर्ज वो किसी एक इंस्टेंट पे उन्होंने कोई डिस्टेंस कवर किया है पर आवर किया है या पर किलोमीटर आवर किया है, तो अगर वो किसी भी इंस्टेंट पे अपने स्पीडोमीटर पे यानी कि देखते हैं तो उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उनको जो वैल्यू मिल रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट्स द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। कि इसको इस तरह अलाइन किया हुआ होता है उस स्पीडोमीटर को अलॉन्ग विद द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कि जब उसमें जब टायर्स जिस डिस्टेंस से वो मूव कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस तरह उसके अंदर चेंज आ रहा होता है उसको rotation per minute. रोटेशन पर मिनट उसको वो कैलकुलेट कर रहा होता है। Okay, brilliant. And you also informed us about the digital. Who is making this digital pyramid? Computing students like you. Okay. Good. Okay, these are also the other applications of derivation. फर्स्ट है कि प्रॉफिट लॉस बिजनेस वगैरह में जो प्रॉफिट लॉस को फाइंड करने के लिए यूज होता है, यानी कि जब हम किसी भी बिजनेस में एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो अगर किसी ने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करना है कि वेदर यहाँ पे मुझे फायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन जो है ना That's okay. They can understand it. If you will explain, you know, they are genius. नेक्स्ट है इसके टेम्परेचर की वेरिएशंस जो होती हैं, जो हमने फिजिक्स में भी स्टडी की है कि जिस तरह वेदर सेल्सियस में या फॉरेनहाइट में, तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो उसकी भी अगर हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम अगर फाइंड करना चाहें तो वो भी हम डेरिवेशन के थ्रू कर सकते हैं। स्पीड वाला अभी मैंने बताया है। उसके बाद रेट ऑफ फ्लूइड इनटू अ कंटेनर, कि किसी भी एक कंटेनर में आप फ्लूइड पुट कर रहे हैं और उसको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, फॉर एग्जांपल अगर मिलीमीटर्स में है वो बीकर या वो फ्लास्क, तो उसमें अगर आप 20 उसमें देखना चाह रहे हैं 20 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर water tank and there is some hose, okay, pipe outlet, so you can, it is taking 30 minutes. So each minute will tell you some information that and each minute how much water is getting out of that tanker. Okay. So उसमें भी एप्लीकेशन यूज होती है। उसके बाद बायोलॉजी टर्म में इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए जो ग्राफ यूज किया जाता है, spreading in one day, okay, in each second. For example, once some patient is going okay under the stroke, each second 800 neuron cell is dying. Are you getting what? 800 neuron cells are dying in each second. Once some person is, because vein is exploding, blood is okay, go outside of the veins, so it damage the brain area. So this is something in the calculation and the rate of change. ओके, नेक्स्ट भी उसी से रिलेटेड है कि ब्लड की सर्कुलेशन है हार्ट को, और उसको भी The heart pumping at the rate, okay, if the pumping is slow, then we are going to okay die this kind of things, okay. So ओके, अब हम केमिस्ट्री के टाइम में अगर देखें तो केमिस्ट्री के टाइम में भी हमने कंसंट्रेशंस वगैरह को पढ़ा हुआ है, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की कंसंट्रेशन किसी एक रिएक्शन में आप चेक करना चाह रहे हो तो उसको भी हम डेरिवेशन के yeah, थ्रू for फाइंड कर सकते example, हैं। you want to okay some acid will burn okay at some particular moment. If it is very much dilute, it will not may harm, but it is very much okay pure, or its intensity is growing with the at some moment okay it will explode, okay, and that moment is telling you some kind of a change at that particular instance of the dangerous. ओके, सो डेरिवेटिव की एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं इसको, कि जब भी हम किसी भी लाइन किसी भी फंक्शन का जब हम उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं तो अगर
उसकी हम x की दोनों वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं कि वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं, और अगर उसका आंसर सेम आता है तो दैट्स मीन कि डेरिवेशन उसकी एग्जिस्ट। Just please, I can understand you are tired, but f of x sin x, okay, some x, if you are considering some value of x, okay, and here f of x, and this is the positive, this is the negative. On real line, 1, 2, 3, -1, -2 like thing. Okay, if I am considering -1, then you will get somehow 0.88 like blah. Okay, so for 1 you will also get the same answer. For if you are reducing, then you will get 9 approximately. Okay, I am writing here. So 0.8. So you will get the same answer for left hand value. Okay, negative values for positive values. You will get the same output. This shows limit exists, derivative exists. Good. Do you know how to go back? Okay, good. उसके बाद डिफरेंट डेरिवेशंस आ जाती हैं कि फर्स्ट टाइम डेरिवेशन जब हम लेते हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एक फंक्शन की जितनी टाइम्स डेरिवेशन रिक्वायर हो उसकी डेरिवेशन लेना, वो कैसे लेते हैं इसलिए। उसके बाद डेली लाइफ में हम जो एग्जांपल्स देखते हैं उसमें हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन को स्टडी किया हुआ है कि वो क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम, और एक्सीलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर हम लिमिट लगा के del t approaches to 0 कर दें, so that's mean कि now they are called the derivatives. Okay, here this is very simple thing. For example, you are driving some car, okay, and car is in static position. Okay, so for example, this is a car, it is in static position, and if we apply some force on car, then of course with the change it is moving. Yes. And what is this? Velocity. Position is change in position with respect to change in time. Okay, it's velocity. If I am pressing the accelerator, I am applying the more force, then what will happen? Velocity will change, and then velocity will change, it is known as acceleration. Yes. Velocity will change, it is known as, okay, normal movement, that is the change in its position. If somehow like this, okay, on the accelerator, on the boost up, on some power, then which will change? Velocity will change. With respect to some change in time, then it is known as acceleration. Okay, good. ये जो बात अभी मैंने बोली है वो ये एक्सप्लेन हुई है कि उसमें del t approaches to 0 कर जब उसमें लिमिट अप्लाई करके हम Yeah, you want to know the information at an instance, okay, some particular instance, then it knows. Okay. Okay, very good.